Good afternoon. It's me, Nandu, Sabdi Bandu. It will be a steady live today because I've put my phone on a tripod. And yeah, that's it. Hello, Sangeeta ji. How are you? Kaise ho aap? तो कुछ ज्यादा बोलने तो मैं नहीं आई हूँ और मैं कोई ऐसा सस्पेंस वगैरह भी नहीं क्रिएट करूंगी. मैंने I'm good, thank you, संगीता. हाँ, मैं कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगी. You know, मैं ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ. ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਿਲੀ ਜਾਣ. ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਹਨਾ. You're just lightening my load. Lightening my load ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹਲਕੇ ਕਰੀ ਜਾ. So put me to the side. I really do not have a problem with your shorts because yes, I've seen them and they're actually quite funny. You know, true to form, you're being entertaining. But what I will say is then limit your anger, jo bhi gussa aa, limit it to me, bakiyan nu chhad de. Because ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ. So ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗੁੱਸਾ, ਖੁੰਦਕ, whatever, ਜੋ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ. ਐਂਡ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੱਥ ਕੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਲਤ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵਸ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਰਿਚਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ it is absolutely below the belt. So I've gone below the belt. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ. ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ. Make up your mind who's to blame. Make a list. List ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਕੌਣ responsible ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਡਿਆ, right? And there's a part of me that goes soft and then I feel bad, but then I think, well, no, right? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, maybe ਤੁਸੀਂ I don't know. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਇਆ,
ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਵਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Whether we're good people or whether we're bad people, we all get hurt. You know, and I don't want to say this again, but a widow shaming someone else or alleging that they are a widow or alleging that they don't have children and then turning that into giggles and it's entertaining and it's nasty. No, it's not done. It is not done. Right? I mean, you keep changing your story कि इन्हें क्या, उन्हें क्या, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ, ਹਨਾ? It's not nice. ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੋ, fine. But if you're going to go below the belt, then please do not cry about other people going below the belt. Yeah, and you know, there was another thought that popped into my head. ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, if it's not true, think about the repercussions you will suffer, because that's almost like cursing someone, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ, ਹਨਾ? ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ in a young age, they do not have to go through that. It's different for people like me who've lived my life. It's fine. I mean, it's not fine, but yeah, we can look back and we've got some fantastic memories, and you know, we've learned a lot from it. But if you're targeting someone who is young, think about the impact on those people. You know, God forbid that it's true. Just have a think. ਤੁਸੀਂ ਨਾ I'm trying to think rationally, I should say. ਤੁਸੀਂ deserve ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ we even think rationally for you. ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਹੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲ ਹੋ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ? ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਧ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਹਵਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। But then ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ maybe ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, but ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਮਜਬੂਰੀ views ਲੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ 'ਚ ਵੀ ਅੜਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਣੀ ਆ। I am pissed off. I'll be honest, I am. But I just think, you know, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Hello प्रतिभा जी, कैसे हो आप? So, ਨਾ ਰਿਚਾ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਨਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਨਾ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਨਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। Hello Vimmy, I'm fine, thank you darling, how are you? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, it's fine. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਬ ਗਲਾਟਿਆ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕੀ ਦੀ ਬੰਦੂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤਾ ਦੀ ਬੰਦੂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਬੰਦੂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਹਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਟ ਬਣਾ ਕੇ, which to be fair,
they're not as offensive as mine, but at the end of the day, you went below the belt. ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੁਕਰੋ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ observe ਕਰੂੰਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗੀ, maybe, but I had to observe you. And, you know, within a couple of hours, you decided to put yourself back into a very prolonged labour, and that's your choice. Her shorts are very cheap. Nah, they're not. Listen, that's her way. She can only do what she knows how to do, and if they're cheap, that's fine. I can't complain about her shorts with me because I've hardly been the epitome of dignity in terms of what I've done to her. And there's a part of me that, you know, there's a big part of me that's saying, well, you know, she deserved it, she asked for it. But my point is, whomever she said it for, right, even if they're our biggest enemy, don't do it. She's now claiming that she's done it for someone else who's on her case. Well, she was advised not to mention her. Right, once someone's gone, you've had a fight, great, move on. But she brought that on herself, and if she's getting it from there, then she deserves it. If she's getting it from all the other channels, she deserves it. Yeah, I'll be gone in about 10 minutes. Don't worry. I'll open the live specifically for you, to both of you. This isn't yeah, I'm not going to let you gate crash this one, my darling. Yeah, so मैं फिर कहूँगी अनु, wow, my first crown. I can't see the crowns. Hello, Jyoti, our crochet queen. हाँ, मैं उसको रिप्लाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने एक बारी भी अपोज नहीं किया उसने जो किया. मैं कहती हूँ करे, but then limit it to me. Hello, Atrangi ji. Thank you. हाँ, जिन्नी पढ़ासिया इत्थे कढ लो, and I'll tell you why. Because I think in about 2 days' time, what is it, Wednesday today? Yeah, Friday onwards, I'm not going to have the time to even look at YouTube. So, Ohuyana, what I don't know won't hurt me. So, Khadija, no, God forbid, Vimmi, never, ever. I want you to be happy. I want you to move forward in life, okay? And I want you to put all this behind you. Hello, Kundu Aditi. Oh, thank you. Oh, I think I got my friend. Oh my God, this nutter, she should be asleep. Hi, good morning. Hello, good morning to you. Hi, it's been some time we've spoken, and I know. this Hello. hi. So this topic, I'm going to limit myself to this topic. Hang on, Rich. Hang on. Hanji, Hang on, hanji. Rich. Hang on, Buddha. Hello, Tanu. Rich. Huh. How early is it? No, where no, you are? I'm already awake. क्या कहते हैं? I've been awake for the past 2 hours, I think. Yeah, I don't even want you to get involved in this topic. No, You know no, what no. happens? Let me tell you something. Hmm. What happens is, then she'll basically, you know what people do? They start making assumptions कि ये तो झुंड में कर रही है, अब मुझे target करवा रही है, अब ये है, वो है. And I don't want that. And the other thing, more importantly, I do not want anyone that I care about being targeted. Hon kitte chale gayi, hon richa chale gayi. I hope she hasn't dropped off because she's pissed off. But honestly, I don't want anyone targeted. Hi, sorry, मेरा हाथ लग गया था. No, I'm not going to like attack or anything like that. मेरे को बस एक दो sentence बोलने हैं, which is basically देखो,
I क्या मतलब lot of people on YouTube, sorry, in personal life, otherwise बहुत disagreements हुए हैं, बहुत लोगों में गुस्सा है for different reasons, मेरे में गुस्सा है for different reasons, but at the same time, this is not the way to include family. मतलब देखो, I am not interested in getting into कि how dare you say all this to her, how dare you say all that to her, because भैया ये करके मैंने देख लिया, and this is a public disclaimer, मैं अब किसी के भी फड्डों में इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, but the fact Good. remains कि अगर मेरा आप I don't like you, ठीक है, I don't like say XYZ, I know you that don't does like not me. mean that does not mean कि I'll go and say nin this that. I can say okay, this hurt me what she did, this was so ये and वो कि मेरे को पागल बना दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है, लेकिन I cannot do what crosses all limits. I mean ये बात भी एक है कि आप इवन आप प्यार से, गुस्से से, शॉर्ट से कुछ भी कर लो, उस लेडी को समझ नहीं आएगी कुछ भी बात, वो अपने वहां पे ही स्टक है, एंड लेट हर बी स्टक, लेट हर एंजॉय दैट फिल्म, इवन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं बोला किसी और को बोला, तो इज दैट जस्टिफाइड? मैं अगर आज मैं आज अगर रिच है ना कि yeah. किसी को भी बोला हो, जब इतनी गंदी बात होती है, then it's not acceptable. यहाँ ये लोग सोचते हैं कि अगर आपका कोई दुश्मन है, right? तो अगर उसको बहुत कुछ गंदा बोला गया है, and as a दुश्मन we should rejoice. No, Mankor, hello Mankor. We should rejoice. No, I don't rejoice that sort of thing. My friend has always been very simple. अगर मेरी किसी से दुश्मनी हुई है, right? तो मैं one to one लड़ती हूँ, झुंड में नहीं लड़ती. And even when I've gone onto this buffoon's panel, I've refrained from attacking people that I don't like. Maybe in exceptional circumstances, again, but that's me letting myself down. So I don't have this thing where I need support or backup because I want to get at somebody. No, जो भी होता है, it's like one-to-one and you sort it. You'll scream, shout, swear at each other for a few weeks and then you get over it. Hello, breathe. Hello. So I don't care who she said it for, right? And I don't care that whomever she said it for, they may hold a lot of hatred for me as well, for their own reasons, and I don't really give a shit about that either. But, widow shaming, I'm not going to accept it. Children, these women, when they open their mouth and they say things like, "Banja, aap bachche paida nahi kar sake, ye flana, temkra," bahut kuch suna hai, right? So, because I know it cuts deep, I wouldn't even want that for someone that doesn't like me or I don't like them. So we all have our own moral compass and we all operate at a very different level to each other. And some people, yeah, they might be happy if their dushman's being attacked. But in Punjabi, we do say, "Dushman mare ta khushi na kariye, sajna bhi mar jana." But she's not going to understand. And I know I'm pissing in the wind, having a go at her. And I don't want to have a go at her. But when she keeps attacking the people I care about, I care about Richa, I care about Rani, Gauri, Shilpa, all these good women. These are all the women, Dolly, what she did to Dolly, I didn't even realise that she had done that to her. So many different people. And then when you just think, no, you've got to stop because they've appealed for it to stop, okay? But you're not stopping. So I'm saying if you have found someone who you believe is an easy target, and let me tell you, Jalebi baby, I am
the least of the easy targets on YouTube, because I either go quiet or then I explode. So I've exploded a couple of days ago and now I'm calm. So what I'm saying is, if you're getting some sort of joy or release, or you're venting and it's making you feel better, then मुझे अपनी टारगेट रखो, मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं कह रही हूँ फ्राइडे से मैं तो यूट्यूब भी नहीं देखूंगी। हाँ, अगर बच्चियों को पैनल चाहिए होगा या मैं ऑन कर दूंगी उनके लिए, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। सो रिचा ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਬਿਗ ਰਿਚਾ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੌਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੂੰ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, leave them alone. They're happy-go-lucky women. Okay, you've hurt them. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੋਲ ਕੇ I would say it to you, and I've said a lot of things, so I don't even expect any loyalty. Now, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, let me just take a couple of comments. जब तक आप कमेंट ले रहे हो तब तक आई हैव टू ऐड वन मोर सेंटेंस, देन आई लीव। नहीं, बोलो। दिस मैसेज इज फॉर द लेडी, डायरेक्टली आपके लिए है। आपको भी ये शब्द बोला गया था और उस दिन जितना अपसेट आप हुए थे, हम जैसे लोग भी आपके लिए अपसेट हुए थे कि चाहे वो हो या ना हो, हम कौन होते हैं किसी का मैरिटल स्टेटस पे बात करने वाले। एंड आप उस दिन, आपकी आवाज में पता लग रहा था आप कितना गुस्सा हो, कितना अपसेट हो। और आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको बहुत बुरा लगा था। लेकिन आपको बोला गया था एक टाइम पे, आपको इतना बुरा लगा, आपके सामने, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे पैनल पे कोई बोल के चला गया इतनी बड़ी बात, किसी के लिए भी, चाहे गंदे से गंदे पर्सन के लिए भी। कोई इतना गंदा नहीं है कि अगर कोई विडो है तो उसको बोले हाँ तू तो विधवा है, या फिर कोई अगर मैरिड है उसको अगर विधवा बोला जाए तो उसके लिए कितना अपसेटिंग ये हो सकता है, आपको पता है, बिकॉज आपके साथ हुआ है। लेकिन आप अगर ये सेम चीज अलाउ कर रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कल को अगर आपको ये फिर बोला जाएगा तो फिर आपको फिर कैसे कोई प्रोटेक्ट करने आएगा, या फिर आपका कैसे कोई साइड लेगा, या दूर बैठे लोग, हम जैसे लोग कैसे आपके लिए खराब फील करेंगे कि चलो ये बोली थी अब इसके साथ हो गया। प्लीज थोड़ा लगाम लगाओ अपने पैनल पे, अपने कमेंट सेक्शन में। और ये तो मैं दोनों साइड कहूंगी, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, लेकिन फिर भी मैं दोनों साइड कहूंगी, क्योंकि भैया तमाशा तो सबने बनवा लिया बहुत बड़ा अपना, लेकिन इतना इतना कलेश। Sorry, no, I don't agree with that. I mean, वो शांत हो गए थे, she will not stop because her agenda is different. And going on your point, remember, I think it was last year or maybe 18 months ago. Yeah, it could have been last year. You know, when I lost control, and then I made some really, I mean, I was vile. Let's face it, I can't excuse myself and I can't defend myself. And I overstepped the mark and I said something about, a married widow. Now, I will never apologise to that woman. She'll have to accept the apology that she never got from me because, what had happened was very below the belt to me. But I have to sit with that thinking, shit, man, that came out of my mouth. That's disgusting. But like I said, I'll never apologise to her. But do I regret that coming out of my mouth? Absolutely. Absolutely. अब ये पता क्या बोलेगी? ये है, ये उसकी सहेली. No, I'm not, and I never will be. But फिर भी इससे तो वही अच्छी थी. Not, I don't even want to say it. But if we do a comparison and it's talking about lesser of the two evils, she's definitely lesser than the two. ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ when we lose control ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ,
ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ and then you have to live with it. You have to live with, oh my God. And that's the danger of anger. That is the danger of, because it makes you lose control. It makes you lose control. But I don't even know. Just Sachi Pucho, am I appealing to a better nature? Has she even got a better nature? I don't know. So I'll take a couple of comments. I don't know where. So breathe is Parmar. Vimi G. There's something in Hindi there, Rich Jyoti Varma's written it. आपके comments मैं पढ़ती हूँ बहुत funny होते हैं. हाँ, बहुत funny होते हैं. Preeti saying hello to Shilpa, Jyoti, we are moderators. Well, obviously, I think it goes without saying you're moderators. You're going to be on the panel. You got to keep an eye out on what's going on in comments because I'm not going to be around. She will not understand a single word. Nay, I think samajh aati hai. She has selective hearing and वो वही सुनती है जो उसे ट्विस्ट करना होता है. ज्योति कह रहे हैं मैं रिचा की लाइव मॉर्निंग में सुनती हूँ और आपके कमेंट्स ढूंढती हूँ पढ़ के बहुत हंसी आती है. हाँ, she's very funny. Atrangi creation, she has created a mess, almighty. मैं आपका कमेंट डिलीट करने वाली हूँ because आप उनका नाम ले रहे हो. My sharp eyes are all around. You know, मैंने इसलिए डिलीट किया कि मैं इस वक्त उस मूड में नहीं हूँ कि उसके जो भी सूडो सरनेम है वो मैं इज्जत से अपने कमेंट्स में भी लूँ. So my message was very clear. जिन्नी खुंदक गुस्सा जो भी आ jealousy है ना, वो मेरे ते कड्डी जाओ है ना. It's water off a duck's back. But ਜਿਹੜੀਆਂ actually ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੀ ਦਿਲੋਂ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ the amount of times I've tried to escape, only I know. The amount of times you cross the line with me simply because you struggle to accept the truth. And when you cross the line and I'd say, you know, that is totally unacceptable. So, yeah, take it out on me. Kulli shukriya. Kulli shukri. God. Tu Nandu ya Bandu, tu shorts bana. Jo marji kar, hai na? मैं earlier in the week भी बोलिया सी short खेलने ते आए ना तेरियां चीकां निकलियां हुण तेरियां चीकां जइयां ही निकलदियां आ है ना. So जिन्ना चिर चीकना आ चीकी जा. Yeah, so I think I'm coming up to 30 minutes. I will say again, leave those girls alone. In fact, जो आप में कीड़ा है ना कि आपने Rich has dropped कि ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ. ਇਹ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ. ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆ. ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ take a break, ਸੋਚੋ, sit back. ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ what you stand to lose. What's the biggest thing we can lose in life? Right? It's not dandolat. It's your dignity. Have you got no value on your dignity? So, अपने आप ते तरस खा ला. पर मैंने लगदा तुसी खाना नहीं. But I'll say again, जे बार रिचा ते, रानी ते, गौरी ते, शिल्पा ते, टोली ते, किसी ते भी, right?
गंदा गंदा बोलिया, हत्थ कस्सी गए फिर ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਣੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਈਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ so ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ it's fine and I'm not playing the martyr here I'm not playing the martyr I'm saying it because I know come Friday I won't even be looking yes I will pop into my friend's live I will pop my head in and I will say hello you know why because they're my friends and they care and that they don't judge yeah they've they did keep pulling me back to your channel but you just think about that as well and know why अच्छा आज देखो कौन आया विमी आ गई hello Vimy how are Love you you and a lot of respect for you, Lou. oh सबकी बंधु आपकी तो मैं बंधु हूँ जो ये मेरी फायर क्रैकर गई अभी अभी इसकी भी मैं बंधु हूँ and you know ये लोग पता नहीं इनकी सोच क्या है in terms of दोस्ती etc and you know 100 बारी लड़ेंगे गलतियां भी हुई हैं in the beginning and मैंने तो hands up अपनी गलती मानी थी है ना no defense for me I should have known better but yeah I was new to YouTube and whatever right and I don't mean whatever dismiss it's literally me saying that I really messed up and the only way you get closure from a situation like if we just take our example right you know the first oh I've got another guest hello Tanu hello हेलो hello हेलो कैसे जेरी हो हाय ठीक उठ हूँ आप खड़े मैं ना मैं अभी म्यूट रहूंगी और उसके बाद मैं बोलती हूँ ठीक है नहीं कोई ना हो जाओ म्यूट कोई ना no don't worry um and then you realize that what you've done wrong and more importantly you realize that actually they were good girls and then have it in you right step out of your ego and say what you've got to say to them and then that's how you get closure but these women what I've noticed these again Oof. you know I'm very calm today so I really don't want to say anything harsh about anyone and I know that gives her the opportunity to say ਇਹ ਬੰਦੂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ right ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ सोचना सोची जा ਇਹ ना किसी ਨੂੰ जितनी भी ये हैं औरतें जो भी ये करवाती हैं क्लोजर नहीं देती यार they don't She is and that famous for passing on concoctions, Nindu ji. Every day lie. Tons of lies. and you know if it is a source of income then fair enough because किसी दी income पे हम कौन होते हैं लात मारने वाले है ना and we don't know the reasons In behind fact, we should feel blessed that somehow we are helping her to earn something. Now, if she is defaming and earning, then also we are very happy. Earn it. yeah but हमें कौन सा जिताना है ना मैंने और थोड़ा क्या सा जिताया है इन लाइफ के अगर मैंने ये तक कहा कि जलेबी बेबी देख तू मुझ पे बना वीडियो बना तो मुझ पे वो शॉर्ट्स वगैरह बना जो भी इनकम होगी लेकिन बचेगी नहीं है ना जी चलो मेरी तो बच जाएगी it doesn't matter if I've really hurt you yeah I've hurt you and the chances are if you don't stop I said yesterday I will increase the frequency and I will increase the intensity within the next 2 days I will make loads and just schedule them right so then I'm not bothered from Friday onwards but you know all the girls that were loyal to you stood by you were hurt when you were hurt were happy when you were happy if you're going to try and earn money from these women who thought well for you ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ Hmm. so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ just
little bit of introspection, a little bit. You're enough damage. And Jalebi, I'm talking to you direct now. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ अपना नुकसान है ना किता ईगो ਦੇ ਵਿੱਚ has she just gone live करने दो बोलेगी मुझ पर ठीक है it's fine बोलने दो मैं तो सुनूंगी नहीं इसकी लाइव्स तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी right शॉर्ट सामने आते हैं and I'll say continue it's fine है ना मुझे कोई जी प्रॉब्लम नहीं at all ਸੋ ਬੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਆ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕੀ ਦੀ ਬੰਦੂ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦੂ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਤਾ ਦੀ ਬਣਾ ਹੋਰ I can't think of anyone else actually at the moment oh yeah ਮਨੀਤਾ ਦੀ ਬਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗੀ ਦੀ ਬਣਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ because by every hour of every day ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ hello Rani hello एब्सोल्युटली इस पे है ना थोड़ा गोबर ज्ञान हमें भी देना था एग्जैक्टली कि 3 साल की फ्रेंडशिप इज नॉट अ वेरी मतलब लेस टाइम इन दैट केस आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपके जितने फ्रेंड आपको छोड़ के गए जितने दे ऑल आर सेट ऑफ लायर्स वो सब झूठे आप सच्ची फिर भी उनके देखिए कन्विंसिंग पावर कि उनके पास ठहराव है बात रखने की तमीज है तहजीब है बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बड़े ही स्टेबिलिटी के साथ वो अपनी बातों को रख रहे हैं सो ऑडियंस इज ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम मान लिया कि वो सब झूठ हैं सब के सब जितने पैनल पे आ रहे हैं वेदर इट इज गौरी जी रानी जी देओल जी ऋचा जी एनीवन शिल्पा जी श्रीजा जी पर आप अपनी क्यों इतनी फजीयत करा रही हैं दोस्ती की वैल्यू नहीं थी एटलीस्ट खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही थोड़ा तो स्टेबल हो जाइए थोड़ा चुप हो जाइए बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग मतलब यू आर जस्ट मेकिंग योर फन नथिंग एल्स अपनी नौकरी करा रही है किसी का कुछ नहीं जा रहा है एवरी सिंगल स्टेप मतलब जो भी आप स्टेप ले रही हो किसी ने कुछ भी बोला यू आर कमिंग लाइव किसी ने कुछ भी बोला यू आर कमिंग लाइव एंड अगेन फिर वहां पे वो हाँ वो चलो चीज चलो इतनी ज्यादा तमाशा बना विमी रही है हाँ जी पता नहीं जी क्या है इसको किसी तरह का पैरानोया है या शीज वो क्या कहते हैं कंस्पिरेसी थियरिस्ट नाउ इसको लगता है ना कि नंदू ने इसके बंदूक छीन लिए ऐसा नहीं होता ऐसा तो बिल्कुल नहीं अरे होता ऐसा कोई कर ही नहीं सकता यू नो इवन इसने मेरे साथ बहुत बारी बहुत बदतमीजियां की मैंने कभी भी रानी से नहीं दिस टाइम तो शी हैज क्रॉस्ड ऑल या लिमिट्स रिचा जो से शॉट डाले हैं निंदनीय है वो बहुत गंदे शॉट्स हैं नहीं don't Vim right I'm making a humble request don't criticize her shorts on me when I'm not criticizing them and that's not इसलिए नहीं कि मैंने डाले मैंने तो बहुत Minji, below the being an belt जाकर audience on डाले YT, what I ठीक है felt I spoke. I'm sorry. no that's fine what I'm saying is right so what happens when we calm down we then have a more rational head on us and my view is if that's her way of venting and she wants to get her gussa out then ji sadke kaddo but restrict it to me leave the girls alone all of them leave them alone because they don't deserve it because they were really loyal to you they cried when you cried they were happy when you were happy so it's not fair on them and all the viewers below that used to support her and she had her guns turned on them it's not fair on them they were loyal supporters so anyway She made her big I'm loss, nothing else. और क्या ही yeah बोलें? She made her big loss. She it's didn't use fine her brain. हाँ, बस. कोई बात नहीं विमी मैं जी. यहाँ बंद करूंगी and immediately I will open another live for you because that will be for just you and Tanu and you the moderators are there now so I It's haven't fine. got हाँ. to worry about the comments what I will say is if there are people who come on the live and they say hello probably because they know me probably because they know me just please acknowledge and say hello to them yeah
Oh, sure, Nancy. Right? And write the, मतलब title should be common chit chat. Today we ठीक are है, not dragging Bekabulal throughout the day. ठीक है. जी, That's common fine. chit chat. Okay, give me 5 minutes Okay. and I'll do that. Oh, sure, So, sure, sure. so everyone, thank you for hearing me out. More Rest power to you, assured, Nandu. I'm Give your not. attention to me and be happy always. अच्छा ठीक है जी. okay. Rest assured, I've not gone soft. Um, but yeah, I do feel protective about, the girls. I do feel protective, and it's not nice that they keep getting attacked. You And are in very safe hand, very patla safe hand. 48 kgs. right, okay. Bye bye, girls, and I will reopen it And for please do join our live too, दोस्तों जो लोग यहाँ पर हैं, आप लोग को मजा आएगी. ठीक Within है. 5 minutes. It'll be 5 minutes, honestly. जी, जी. Okay. Bye, Rani. Bye, Pratibha. Bye, Vimmi. Bye, Atrangi and Jyoti and whoever else is watching. Because if I keep scrolling, my eyes are going to go funny. Okay. So bye-bye. Bye-bye.